बोल रहा हूँ। हाँ हितेश जी, अनुराग बोल रहा हूँ। ये हमारा रूपारेल वेस्ट स्काई में 1601 का बुकिंग था। कल आपका मेरे डैड से बात हुआ था, राजेंद्र मिश्रा से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनका अभी फोन भी आया था अभी। हाँ हाँ बोलिए। एक किसी के साथ बैठा हूँ, कैन आई कॉल यू बैक इन 5 चलेगा चलेगा, श्योर, नो इश्यूज। ओके ओके, बाय। No, I was speaking to your dad. He was saying something about, project will not get completed on time and all that. I said, there's no question of that. You already actually removed. it is a question. So after I booked the flat at on your site, I did some background check. So actually the main thing that happened was Nishit had put a name of your homes in the brokerage section, like in the channel partner section. So it raised the question, and I was also hearing like few negative feedbacks from some of the brokers. So I decided to do like a basic background check, like what exactly people are saying about this particular developer. So after I did my a basic Google search, I just searched for Ruparel Realty complaints. And I've even shared the screenshot on mail. So if you'll see, you'll understand where exactly this particular. Yeah, so I went through the email. That's why I called on that number that was given on the email. I called that number, and I think that's why your dad picked up. So I'm calling on the reference to the email itself. So then वही था, फिर उसके आगे हमने मतलब सारा बेसिक डिटेल्स वगैरह जब भी देखा तो निशित से मैंने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम डे कम्युनिकेट किया। तो इससे पहले तो मैंने निशित को इतना भी बोला था कि ये चैनल पार्टनर, ये ब्रोकरेज का सेक्शन में नाम कहाँ से आया। तो उन्होंने वो टाइम पे सेम टाइम बोला कि अरे वो धीरेन भाई के भाई हैं, आप साइट पे आके बात करिए। एंड साइट पे हम गए तो धीरेन मतलब उस दिन निशित थे नहीं, उन्होंने बोला मेरे सीनियर से बात कर लेना। बट देन साइट पे पहुंचते ही धीरेन मिले और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, बट हमने आपको जो प्राइस पे ऑफर किया प्रॉपर्टी, तो ऐसे भी कुछ ब्रोकरेज वगैरह तो आना नहीं है आप, लेकिन आपको चाहिए तो आपका जो ओरिजिनल एज इन प्रॉपर्टी जो हैंडल करते हैं उनका नाम डाल दीजिए, आप सीआरएम में मेल करिए वगैरह। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। वो टाइम पे तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कैंसिल करना है या कुछ। तो वहां से थोड़ा सस्पिशन रेज हुआ कि हाँ भाई, मतलब इनके एम्प्लॉयज अगर इस तरीके से अभी फिलहाल कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो उसके बाद मैंने फिर ब्रोकर से भी बात हुई थी पहले ही डैडी की, तो वो टाइम इनिशियली तो हमने बुक कर लिया और मुझे तो मतलब एक प्रोजेक्ट मैंने देखा, मुझे पसंद आया, उसके बाद ही मैंने बुकिंग की थी। तो मैंने उनके फीडबैक इग्नोर किया, मैंने बोला ठीक है यार डिले वगैरह देखते हैं। बट फिर जब ये एम्प्लॉयज का ये तरीके का बिहेवियर आया, उनको खुद क्लैरिटी नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है, तो मैंने देखिए निशित से ना जब मैंने रिसर्च किया ना, उसके बाद मैंने निशित से बात की थी कि आप खाली इतना बताइए कौन से कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं आपके। निशित आंसर ही नहीं कर पा रहे। निशित बोल रहा रूपारेल ओरायन है जो मैंने रिसेंटली डिलीवर किया हुआ है। तो एक्चुअली मैंने फिर बाद में रिसर्च किया तो मालूम पड़ा रूपारेल रियायती एक्चुअली पहले शायद नवी मुंबई में ऑपरेट कर रहा था, और उसके बाद मुंबई में मतलब एक्सपांशन स्टार्ट हुआ, और उसमें शायद से अभी पहला प्रोजेक्ट जो पूरा तरीके से डिलीवर हुआ है वो रूपारेल ओरायन है, और उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बट फिर मैंने कांदीवली के आपके प्रोजेक्ट रूपारेल का ऑप्टिमा हुआ, पलाशियो हुआ, स्काई ग्रीन हुआ, सबका मैंने डेटा एक बार देखा तो सब जगह ऐसा है कि मतलब यार 6-6 साल से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, अभी तक डिलीवरी का कोई श्योरिटी ही नहीं है। और ये चीज देख के सीरियसली अगर मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं तो मेरा भी एक इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो अगर इन फ्यूचर मैंने पैसे डाल दिए बट डेवलपर ने जो प्रॉमिस किया है डेट, वो डेट पे डिलीवर नहीं मतलब हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग मुझे ही मतलब महंगी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मैंने निशित को कम्युनिकेट की कि निशित जी देखो ऐसा ऐसा है, आप क्लियरली बोलो कि क्या है, डिलीवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो निशित जी ने फिर मुझे एक्सप्लेनेशन देना ट्राई किया कि ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने सामने बोला कि आपका तो ऐसे भी 16 फ्लोर का फ्लैट है, ये तो हम लोग आपको जून 24 में ही दे देंगे। तो मतलब अगर आप 16 फ्लोर जून 24 में देंगे और आप बोल रहे हाफ बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद मतलब ये करोगे आप, तो बाकी का बिल्डिंग आप इंटीरियर वर्क और आपका जो पूरा ऊपर मतलब स्लैब डालना है तो दिसंबर 25 तो ये लॉजिकल ही नहीं कि आप कंप्लीट करोगे। तो निश्चित वहां पे फिर फंबल कर गया कि नहीं यार ऐसा नहीं है सर, हम लोग कर देंगे, अभी हमारा माइवन का टेक्नोलॉजी है ये वो। तो वो सेल्स पर्सन से ही मुझे कॉन्फिडेंस हट गया वो टाइम पे कि नहीं यार ये पक्का है कि ये डिलीवर नहीं करेंगे। और जनरल फीडबैक दी निश्चित से मैंने इतना पूछा कि ठीक है यार, अगर मान लो अभी स्काई ग्रीन का आपका प्रोजेक्ट काफी लंबे टाइम से मतलब ये हुआ अटका हुआ है, एंड आई बिलीव वो आप भी एक्सेप्ट करो। तो मैंने पूछा कि स्काई ग्रीन का क्या इशू था,
तो वो बोलते हैं अरे वो NBFC क्राइसिस आया, हमारा DHFL के साथ टाई अप था फाइनेंसिंग के लिए और वो सारी चीजें अटकी। तो मैंने वो भी उसका थोड़ा रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि आपने जिनको इसमें आपका सबवेंशन स्कीम है जो बैंक सबवेंशन वाला, तो उनको उनकी EMIs आप मतलब वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बंदे, आपके डिपार्टमेंट से फॉलो कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन वो उसको रीइंबर्स नहीं हो रहा है। फिर काफी सारी चीजें, फिर बाद में मैंने देखा कि आपके जो CRM टीम वाले ही बंदे हैं, नाम याद नहीं आया, एक पर्सन थे गीतांजलि शर्मा करके थी, तो लोगों ने बहुत ओपनली फीडबैक शेयर किया है कि गीतांजलि शर्मा बहुत रूडली बिहेव कर रही है, उनको कॉल करे तो पहली बात तो कॉल नहीं उठाएंगे, 3-4 दिन तक आप कॉल ट्राई करते रहोगे, फिर बाद में वो फेडअप होकर कॉल पिक करेंगे और आप कुछ पूछ कुछ रहे हो, आंसर कुछ आएगा, और बेसिकली आपने अगर हाँ कुछ बोला है ना तो उनका सामने से रिप्लाई ना आए, तो वो उस तरीके का बिहेवियर है। तो ये सारी चीजें मैंने देखी। फिर मैंने आप अगर रूपारेल का ग्रुप में अगर खाली मतलब फेसबुक पे जाओगे ना, फेसबुक पे अगर आप ग्रुप सर्च करो, रूपारेल रियलिटी ऑप्टिमा करके एक फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप वहाँ देखिए, वहाँ प्रोडक्ट का डिस्कशन चालू है लोगों में। तो अगर जब कस्टमर्स बायर्स ये लेवल पे आ जाए कि उनको एक ग्रुप फॉर्म करके वहाँ पे डिस्कशन करना पड़ रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी का क्या मतलब क्या कंस्ट्रक्शन का प्लान हुआ है, कब तक डिलीवर होगा, अरे अभी इतना ही हुआ है, इन्होंने सैंक्शन निकाल लिया है। आपका एक और मैंने फीडबैक पढ़ा, वो रूपारेल ये स्काई ग्रीन का जो शायद 2nd या फिर 3rd वाला जो आपका फेज है, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था, बट 50% बिल्डर ने सबवेंशन स्कीम में मतलब सैंक्शन ऑलरेडी निकाल लिया है। तो देखिए, मैं भी मतलब इतना नहीं है कि एक कमेंट पढ़ा और मैं उसके बेसिस पे कुछ डायरेक्ट जाके मतलब एस्टैब्लिश ब्रांड है रूपारेल रियलिटी के भी मैंने एडवर्टाइजमेंट देखे हुए हैं, और ठीक है यार, मतलब एक कोई बंदा कुछ बात बोल देगा तो आप उसके बेस पे आप सामने वाले को क्वेश्चन नहीं करने लगते हो, बट देन वो चीजें मल्टीपल जगह से आने लगती है। मैंने आपको यूट्यूब कमेंट सेक्शन देखे, वहाँ सेम चीज चल रही है। फिर बाद में कुछ कंज्यूमर फोरम है कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, वहाँ मैंने देखा एक mouthshut.com करके एक वेबसाइट है शायद, आई गेस उसमें वो डेवलपर्स के रिव्यू ही डालते हैं कि पता नहीं खाली रूपारेल के केस में था। वहाँ तो यार लिटरली लोगों ने मतलब यार धजिया उड़ाई है रूपारेल रियलिटी के एज अ ब्रांड। और मुझे नहीं मतलब अगर मेरा ये पॉइंट सामने देखिए, और मैंने कोई सच अभी आपका लीगल तरीके से बैकग्राउंड चेक नहीं किया है, मैं खाली जो है मैं आपको देखिए, आप मतलब जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आपको रियलाइज होगा कि मैं खाली जो सोशल मीडिया पे और जो इंटरनेट पे जो चीजें मिली है मैं वही एक खाली आपको फीडबैक मतलब अभी दे रहा हूँ। तो अगर उस बेसिस पे ही जब मैंने मतलब ज्यादा डीप में जाने की कोशिश भी नहीं की, उसके पहले ही किसी एक ब्रांड को लेके इतनी नेगेटिव ब्रांडिंग है और ब्रांड उस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है, मतलब अगर आपको लगता है कि ये ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एटलीस्ट कस्टमर्स को रिवर्ट करो ना कि मतलब हाँ भाई ये चीज है हमने रिजॉल्व की हुई है। लेकिन तो मैंने पूछा कि भाई अगर ये फाइनेंसिंग का आप जो बोल रहे हो कि NBFC क्राइसिस के टाइम पे आपको इशू हुआ और DHFL का ये सारी चीजें हुई थी, तो उसके बाद क्या? तो वो बोलते हैं अरे सर उसके बाद तो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, हमारे पास आप हमारे एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड देखो, कोई एडलवाइज छोड़ के आया हुआ है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड छोड़ के आया हुआ है, हमारा ब्रांड तो बहुत स्ट्रांग है। अरे यार ब्रांड स्ट्रांग है, आप क्या बता रहे हो यार? आपने जो मतलब आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनके फीडबैक को आपने एड्रेस किया क्या? आप खाली ये बोल रहे हो कि हमने मैनेजमेंट चेंज किया, हमने फाइनेंसिंग ले आई है। ये तो वही बात हो गई कि मतलब मुझे एक खाली आश्वासन दे दिया कि ये देखो ये चीज है, अभी हमने इतना चेंज कर लिया, अब आगे जो होगा वो गलत नहीं होगा, सब सही होगा। तो ये चीज तो रॉन्ग है ना हितेश जी, आप खुद ही समझिए। अगर मैं खाली किसी के वर्ड ऑफ माउथ पे चला जाऊं और जबकि वहां पे मुझे जो सामने जो डिटेल्स दिख रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं, मतलब जैसे निशित ने, मुझे याद है अभी जब हम सेल्स के लिए मतलब उन्होंने पिच किया था ना, वो टाइम पे निशित और धीरेन्द्र ने मुझे दोनों ने बोला था कि हमारा फुल सीसी आ गया बिल्डिंग का। तो जब ये सारा फीडबैक वगैरह सुना, मैंने आपका रेरा का भी डिटेल्स वगैरह चेक किया तो मालूम पड़ा प्लेन तक का सीसी आया हुआ है। तो एक्चुअली मैंने फिर बाकी प्रोजेक्ट का भी देखा तो मालूम पड़ा कि रूपारेल एक्चुअली ऐसे ही करता है, पार्ट वाइज सीसी निकालता है, कभी भी रूपारेल ने फुल सीसी निकाला नहीं। बट स्टिल आपके सेल्समैन ने जो वहाँ पे कमेंट किया वो मतलब रॉन्ग था, वहाँ वो जस्टिफाइड नहीं थी। फिर बाद में इन्होंने बोला कि हमारा डेवलपर तो बहुत ही टाइम से मतलब डिलीवरी कर रहा है, हर एक प्रोजेक्ट हमने टाइम पे डिलीवर किया है, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे मैंने पोजीशन दिया है लोगों को वगैरह वगैरह। और जब मैं सामने एक्चुअल में क्वेश्चन, अभी वो टाइम पे तो देखिए आपको भी मालूम है जब आपके साइट विजिट करते हैं और वो जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वो एक डिफरेंट होता है। वहाँ आप एक जब आपको मतलब चीजें मालूम पड़ती है ना तब आप राइट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो। एल्स आपको जो सामने बोला जाएगा ना आप उसको बिलीव करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मैं सामने कहीं किसी भी दुकान में मतलब मान लीजिए अभी रियल एस्टेट तो डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया, एक मैं कोई छोटी मोटी चीज अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करने जा रहा हूँ तो वो तो मुझे जो फीचर बताएंगे मैं उसको ही ब्लाइंडली एक्सेप्ट करूंगा ना, मैं ऐसा उसमें तो वो टाइम पे इन डेप्थ कोई रिसर्च करने जाऊंगा नहीं।
बट फिर बाद में अभी मालूम पड़ता है कि रूपारेल रियल्टी का खाली एक ही प्रोजेक्ट रूपारेल ओरायन डिलीवर हुआ है। तो इससे तो फिर उनका ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना पूरा, कि हम तो बहुत टाइम से डिलीवरी करते आए हुए हैं। अरे करते आए हुए मतलब कि आप तो बता रहे हो अभी कि रूपारेल ओरायन आपका एक प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है, तो आपके बाकी प्रोजेक्ट की तो यहाँ बात ही नहीं आई। आपने ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि मतलब हमारी हिस्ट्री रही हुई है टाइम पे डिलीवर करने की। और उसके बाद मुझे आपका एक मतलब इशू ये क्रिएट हुआ कि आपकी जो नवी मुंबई की प्रॉपर्टीज अगर आपने डेवलप की है, मैं श्योर नहीं, मैंने शायद ये आपके जो प्रमोटर है अमित रूपारेल, उनके ही किसी इंटरव्यू में सुना था, बट आपके नवी मुंबई के प्रोजेक्ट का एक डिटेल नहीं मिल रहा रूपारेल के नाम से। अगर मैं सर्च करूंगा तो रूपारेल के खाली वो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जो उन्होंने मुंबई में, जो बेसिकली मुझे लगता है ब्रांडिंग के हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं उसको, या क्या है मैं भी श्योर नहीं हूँ, कि जो बेसिकली आपने अभी हाई राइज टावर वाला पूरा आपका, क्योंकि आपके सारे प्रोजेक्ट मैंने देखा एक पैटर्न है आपका, तो आप बेसिकली हाई राइज टावर्स और कुछ एक लोकेलिटी में जाके आप एकदम पूरा पेनिट्रेट कर रहे हो मार्केट। तो आप बेसिकली वही जो आपका फिलहाल जो आपने थोड़ा चेंजेस लाया ना, शायद उसी को प्रमोट कर रहे हो। बट फिर नवी मुंबई मुझे अगर एक डेवलपर का बैकग्राउंड चाहिए कि भाई बंदे ने क्या डिलीवर किया है क्या नहीं किया है, पास्ट कंस्ट्रक्शन जो रहा हुआ है वो अच्छा है या बुरा है, और मुझे वो जस्टिफाई करने के लिए चीजें ही ना मिले, तो मैं क्या बेसिस पे ट्रस्ट करूं। और उसके बाद आपके एम्प्लॉयज के बिहेवियर को लेके इस तरीके का नेगेटिव रिव्यू कि मतलब मेरे ही पैसे, अभी फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बोला कि ये सबवेंशन स्कीम में I've made the payment of interest, but then I'm keep on following with you that to make the repayment to me. तो ये कहाँ से जस्टिफाइड है एज अ कस्टमर? मैं लाइफ में फ्लैट लेने के बाद अगर मैं कभी कहीं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मैं पीस चाहूंगा ना। मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि मैं लॉन्ग रन में आपको फॉलो करता रहूं कि भाई पोजीशन कब आ रहा है, भाई मेरे EMI के पैसे कब आ रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद अब पता नहीं, अभी कंस्ट्रक्शन तो आपका वो एक प्रॉपर्टी हुआ तो कंस्ट्रक्शन इशू को तो लेके अभी कुछ पता चलेगा भी नहीं, बट उसके बाद अगर कोई इश्यूज आती हैं वगैरह, तो वो सारी चीजें तो मुझे एक पीस ऑफ माइंड है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो ऐसा है कि मैंने खाली अभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है, अभी उसके बाद जो डिलीवर होगा वो देखा जाएगा। तो मैं उसके बाद मैंने सारा डिसीजन लिया। निश्चित से भी जो मेरा कम्युनिकेशन हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, तो वो निश्चित भी प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाया अपने, मतलब जो फैक्ट्स उन्होंने इनिशियली बोले, फैक्ट्स नहीं था वो, पहली बात तो मिस स्टेटमेंट थे वो जो उन्होंने बोले, और फिर सामने फैक्ट्स निकल के आए, तो वो दोनों चीजें तो मतलब वो मैच नहीं हुई। और उसके बाद फिर निश्चित ने अगर जो जस्टिफाई करने का ट्राई किया, वो जस्टिफिकेशन भी राइट नहीं था, क्योंकि अगर आप खाली ये बोल दो कि मैनेजमेंट चेंज हो गया और ये चीजें हुई, फिर बाद में आपको अगर प्रोजेक्ट मैंने पूछूं तो आप एक रूपारेल ओरायन बताते हो, फिर वो बोलते हैं एक काम करिए ना सर, आप साइड पे आ जाइए, आप साइड पे आ जाइए। अरे साइड पे आके मैं करूंगा क्या? आप अगर मुझे फोन पे मेरा एक बेसिक क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं कर पाते तो आई डोंट थिंक कि कोई मेरा रीजन है वहाँ साइड पे आने का। फिर तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे मेरा जो डिसीजन कैंसलेशन का बना है उससे प्रोसीड करके कैंसिल करना चाहिए। और बीइंग ऑनेस्ट, मैं अभी फिलहाल तो जिस तरीके का मैंने आपका फीडबैक सुना और उसके बाद जो आपके एम्प्लॉयज का मैंने बिहेवियर देखिए, किसी ने मुझे डिसरिस्पेक्टफुल में बात ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, मुझे उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेन नहीं है। मुझे कंप्लेन ये है कि आपके ही सेल्स पर्सन को आपके ही प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है कि बेसिकली हम डेवलप क्या कर रहे हैं और हम डिलीवर क्या कर रहे हैं और इसके पहले हमने क्या डेवलप किया और डिलीवर क्या किया। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो कस्टमर का हिल जाता है। और मेरा मतलब कॉन्फिडेंस तो पूरी तरीके से हिल चुका है। और मेरा तो जरा भी, मैं प्लीज मेरी बात को बुरा मत लगाइएगा, बट मेरा जरा भी इंटरेस्ट नहीं रह गया रूपारेल के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन का। और उसका रीजन यही है कि आपके जो नेगेटिव फीडबैक्स आए और आपके जो एम्प्लॉयज ने मतलब जिस तरीके से फिर बाद में उनको मालूम पड़ता है कि भाई जिससे मैं चीज खरीद रहा हूँ उसी को उसका आइडिया नहीं है, नॉलेज, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि यार छोड़ो, निकलो यार। तो मेरा ये फीडबैक था। मुझे भी याद है आपके, हम वहां थे तो आप भी डेस्क पे आए थे, तो आपने पूछा था कि अगर प्रॉपर्टी नहीं ले रहे तो फिर उसका क्या रीजन है, फीडबैक लो तो हम लोग उसको इम्प्रोवाइज करें। तो मेरा तो आपको ये फीडबैक बिल्कुल रहेगा कि आप जो प्रॉपर्टी जो एडवर्टाइज कर रहे हैं और जो आप एक्चुअल में बैकग्राउंड में है चीजें, वो ट्रांसपेरेंट रखिए। ये इस तरीके से है कुछ और फिर दिखाया कुछ जा रहा है ना। मे भी देखिए अभी रूपारेल मुंबई एक्सेल का जो प्रोजेक्ट है वेस्ट स्काई का, ये मे भी आगे टाइम पे डिलीवर हो वगैरह, वो फ्यूचर है। लेकिन आप फिर अगर अपनी हिस्ट्री को ही रॉन्ग बता रहे हो और फिर उसके बाद तो मुझे आपके फ्यूचर पे ऑब्वियसली बात है ना, मुझे एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो हितेश जी, मेरा यही सारा कंसर्न था और यही सारे रीजन के बाद मैंने अपना डिसीजन बनाया कि ये प्रॉपर्टी मुझे कैंसिल करनी और बेटर होगा, या फिर मतलब मैं दूसरी प्रॉपर्टी देखूं और बेसिकली एक पीस ऑफ माइंड मुझे रहे। वरना एल्स यहाँ पे मैं अगर एक बार मैंने पैसे डाल के रजिस्ट्रेशन कर दिया तो मैं आगे फिर खाली आपको ट्रेस करता रह जाऊंगा कि हाँ भाई कब डिलीवर कर रहे हो, कितना काम हो गया और ये सारी चीजें। तो उतना प्रेशर तो मैं नहीं ले पाऊंगा गिवन
कि आपका क्या हिस्ट्री है उस हिसाब से। मैं खाली यही एक मेरा है जो मैं आपको कन्वे। ओके, मैंने आपका पूरा सुना। जस्ट सी, फर्स्ट थिंग इज तो ऑब्वियसली I can't force you to do the transaction, but आपका पूरा सुन के I just want you to hear me out peacefully. Sure. And then whatever you decide, obviously I can't force you into any transaction. The point is, see, I'll tell you, unfortunately, हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है। आप दूसरे की बात कर रहे हो, आप किसका भी उठा के देख लो, आपको लोधा के 1000 वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे उन्होंने डिलीवर करके भी इतना क्वालिटी इश्यूज, ये गोदरेज देख लो, टाटा देख लो। अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है जहाँ पे there is always some gap between what the customer expectation is in his mind and what we actually deliver. So it's a standard thing. Now you go and थोड़ा deep dive करके कोई भी brand का देखो, any brand that you like is very reputed. Maybe 2-3 brand, maybe an Oberoi और हिलामिंदारी में शायद आपको इतना नाम मिले, कुछ मिल जाएगा, बट आप कोई भी उठा लो, आपको तो नेगेटिव रिव्यूज मिलेंगे। Just that you did a little bit of research on Ruparel, so obviously those things crossed up and that is what you are recommending. Lekin the point is that whatever has happened. I can't go back in the past and undo that. True. Okay, but whatever commitments we have made to the customers, we can only correct and deliver on those commitments. Now, if you see my entire portfolio, so मेरा portfolio में Parel में भी we have a huge presence in the central side, Chembur, Sion belt also we have huge presence, Kandivali we have a huge presence, और नवी मुंबई जो आप बोल रहे हो, नवी मुंबई was actually जो हमारे प्रेजेंट प्रमोटर उनके फादर का नवी मुंबई में था, बट वो टाइम रूपरेल जैसा कोई ब्रांड वगैरह ब्रांड से काम नहीं होता था वहाँ पे। ओके, पूरा पहले काफी सारी बिल्डिंग्स आप देखोगे पुरानी 20 साल 30 साल पुरानी, कोई ब्रांड नहीं है, कोई नहीं है, वट एवर साइज सोसाइटी वट एवर so there was no branding then. It is when the sons took over the business, they organized the business, made a brand, and it is only a 10-year brand that way, 10-year-old brand that way. It is not a very old brand. But then you advertise it as that we are operating since 2000. And when you say that we are operating since 2000, we have to give you so why hiding that we have developed a project in Navi Mumbai and Navi Mumbai also we have a project. Yes, I got your point. But then no, with the Ruparel name also we have a Palm Beach project. Just hear me out. Okay, sure. Ruparel name के साथ ही Ruparel Sea Palace Palm Beach Road पे है, in the ready property. Okay, now OC is awaited on that particular property. So slightly bigger ticket size, 3 and 4 bedrooms, 5 and 6 and 7 bedrooms. So I will just tell you one by one, project by project, what is the status and when did we start and where we are right now. So in Chembur, the project that Nishit has probably told you, Orion, that we have already delivered. Now, let me also highlight this Orion project was actually taken over by us. It was launched by another developer, some small-time local developer. He, brought it to the film stage, and then he could not take it forward. Okay, then it was stuck for many years. Eventually, we came in. So, a lot of these projects, including Mumbai Excel that you got, actually मैंने ये भी देखा है was developers का था. But then मैं खाली एक पॉइंट रखना चाहता हूँ. तो जैसे आपने आप मेरे को बाद में एक बार थोड़ा सा अगर आप नहीं करेंगे तो मैं एक फ्लो में बता पाऊंगा. I'm happy to then
answer your queries. Sure. So, a lot of these projects that we have are actually projects that we've taken over from other smaller developers. After RERA came in now, there was a lot of consolidation happened in the industry. The smaller players could not, take it forward because of these rules, regulations, escrow accounts, और you have to adhere to. पहले तो क्या होता था? पहले तो आपने प्लॉट का टोकन भी दे दिया ना, उससे भी माल बेच सकते थे, सब कुछ कर सकते थे. इतना रेगुलेशन नहीं था, इतना स्क्रूटिनी नहीं था, एस्क्रो अकाउंट्स नहीं थे, फंड डाइवर्ट होते थे, सब मतलब सब कुछ चलता था. कमिटमेंट्स मीट हुए नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता था. इनफैक्ट एक टाइम था कि जितना प्रोजेक्ट डिले हुआ उसमें डेवलपर को एक्चुअली फायदा ही हुआ. Because property prices kept going up and up and up. So that was that phase. So a lot of these projects that we have taken are actually stuck projects of other developers. We came in. Now see, we have a certain specialty. We believe in doing high velocity sale at a short period of time. I will come to your Kandivali projects also a minute, the number of projects that you spoke about. But अपना जो strength है is that we are able to drive high velocity sales and generate the cash flow, and only that we can complete the project. So the Orion project that Nishit probably spoke about was delivered during the first lockdown. उस लॉकडाउन के बीच में उसका OC आया and then we delivered. We have another 20 acres right next to that which we will launch from the next year. So that was delivered. Then in Sion, we have a project called Sion. If you can take notes and probably, go back in history and where it was launched and all that, you can correlate whatever I'm saying. Now, Sion is right opposite a project called Biomont of Shade Developers. It is at Science Circle. Now, it's a 22-story building. We are currently on the 21st slab already. Almost 6 or 8 months before schedule, we are going to hand over this project. The last slab has already been cast. The finishing work has already started. It has got 2-bedroom apartments in the range of about 3.6. The project is sold out. And we are about to hand over almost 6 or 8 months before the committed delivery date. Okay. Now, in Kurla, we have 3 projects. Pride, Primero. In सबका RERA date is I think 23. We are almost 60% complete. 60 to 70% complete. ये सब 17 माले के cover है, 16, 17. वहाँ पे that particular Chembur, Kurla comes under the funnel. So there is no permission of hiring over there. Okay, so those projects are also completely 100% sold out and completely on track as per schedule. Then, just to add one point, there's a project called Regalia. Regalia was the first project that we launched after the lockdown. The first launch that Mumbai city saw after the first launch was this Ruparel Regalia. This was in August 2020. Okay, 1 year from now. We have reached, that time it was at ground zero. We have reached the 5th floor today. That project got sold out in the matter of 22 days. 250 apartments. 22 days में पूरा का पूरा project बिक गया. मैंने भी नहीं anticipate किया था when I was planning that launch. It was a chance that we took. कि चलो let's get some momentum. Maybe 40, 50, 20, 50. Let it get. It's okay. At least, some movement will start because otherwise no one was actually trying to sell anything or launch anything. Some wait and watch situation. We took that chance and the kind of response we got, even we got amazed. 22 days में 250 apartment मिल गए. आज 6th floor पे पहुंच गया. Coming to Parel, we have a 72-story tower called Orion. We are on the 69th slab now. This particular project was supposed to be 50 stories earlier. Then there was a change of DCR that took place, which
gave us additional FSI. Mm-hmm. So we went higher now. Now we have not sold any apartments on the higher floor, but till 55 floors, whatever we have sold, we have already given the OC and people are staying in that building. Mm-hmm. Okay. ऊपर का माल अभी तक बेचा नहीं है. This is a FSI that we got later on. But then how, like, the existing buyers were compensated for the additional that would be sold, because like then the other amenities that would be there in the project. So there are more residents over there, then the usability would be more. So is there a way? No. So again, it's a luxury project costing 6 crore a flat. Mm-hmm. By adding 15 floors, number of flats that got added were roughly, I think, 20 or 25. Mm-hmm. So it is not that there was any additional load on the infrastructure, because anyways, in that project, we have 9 lifts on each floor. I mean, 9 lifts in the lobby. So but anyways, 9 floor tower anyways. So 9 lifts. I guess it's a 59. So it was. I mean, anyways, in such high rises, there is always, even the foundation, everything, there was some anticipation of this thing coming. So everything was planned accordingly, but we did not sell it. We actually got the FSI for the higher floors. And in fact, the proof of it is, seeing it rather. I don't know, where do you stay? Andheri. I don't know if you can, take some time and make a trip to Parel. You can actually see it. If you come to the building, you will not even know in the building that there is work going on top. नहीं पता चलता. So people already staying in the building. 68 से अभी 2-3 slab बाकी है, and we have not even sold that stock yet. We are yet to sell it. But we thought कि अभी बाकी तो, because the project was financially stable, because we had sold and we were delivered, so we had the collection. So we thought, now let's not wait. We'll wait for the apartments to come up, and then we'll sell it at a ready stage only, and we'll get a better price also, because there's always a difference between a ready and a under construction property. Right next to that, I have another 1 BHK apartment project called Nova. Now, Nova is a 42-story tower. Okay. And this was the first time in South Bombay anyone came up with a 1 BHK apartment. Okay. When we were in the first phase of the lockdown, in 2020 March when the lockdown started, we were on the 6th floor, 6th slab with it. Today in November 21, we have started the 39th floor with finishing, not just the slab. With finishing of the apartment. मतलब हम लोग वॉल्स भी बनाए हैं, विंडोज भी लगाए हैं, टाइल्स का भी काम किया है, लिफ्ट इंस्टॉलेशन भी चालू किया है, पेंटिंग भी चालू किया है. Now this particular project in RERA, just Google and see Ruparel Nova, to the best of my knowledge. I think RERA date is June 24. Okay. June 24, मेरा 59 slab आ गया है, 2 more slabs to go. I have already started process of OC application, and I will deliver this 1.5 years before schedule. Okay. I have a different challenge over there. Now, अभी बेचते वक्त we didn't indicate. We only kept talking about RERA date. But we probably didn't communicate with the customers it will be so fast, or probably even we did not anticipate that we will go so fast. Today, the challenge I am facing is the opposite, that customer is not able to keep up to my payment cycle as per plans. Ulta hai. People come when was this Nova launched? Nova was launched in 2019. 2019. Okay, so I guess the RERA date that you're talking about, 2024, must be extended date, because I haven't seen No. There is extension available to go up to December of 24. But we have not even, used that. Okay. It is not the extended date.
So there, in fact, like I said, the challenge that I have there of some, जो लोन में थे उनका इशू नहीं है, जो सेल्फ फंडिंग कर रहे थे, they are, slightly inconvenienced by the fact that, whatever they had planned in terms of cash flow, they are having a different issue. You never told us, I mean, itna fast hoega. See, a lot of these guys, especially the one BHK man, they are first time home buyers. Okay, and for them, every installment, every slab also matters. So अगर उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया था कि हम लोग धीरे धीरे करेंगे, तो उनको वो चैलेंज आ रहा है क्योंकि महीने में 4-5 स्लैब आ रहे हैं. Even if I am taking 1 lakh रुपये स्लैब और 1.5 lakh स्लैब, तो 4 से 6 लाख रुपये महीने का आ जाता है. तो वहाँ पे वो चैलेंज है. बट हैविंग सेड दैट, 1.5 year before RERA schedule to be delivered. In Matunga, there's a building called INS, where we have our head office also. There also we made this building, same similar Ariana story, was launched before the old DCR. 30 stories or 28 stories तक OC आ गया, and right now as we speak handing over the apartments. और ऊपर का जो है 30 to 40 stories, so there was an airport authority issue over there, but we haven't sold apartments about 40 floors, so it doesn't matter to me. Whatever I will sell now is after I make it. I have not sold a single apartment about 40 floors. Coming to Kandivali, there was a little bit of an issue. What this guy probably gave me some, but I will go a little more deeper into the entire Kandivali issue. Kandivali, we have a very large land. In terms of number of units, I think for a fact we are the market leaders in the number of apartments that we sold only in the Kandivali area. Now, Kandivali, we have 2 large projects called Optima and Sky. And most of the reviews that we saw must be pertaining to these 2 projects, and primarily because of Sky. Now, these 2 projects were launched in a phase or during a time when RERA was not even there. Before RERA, we and many other developers used to launch projects even before the plot got vacated. Okay. And ours was SRA, and it was a large SRA plot. Now, in Optima, the issue happened that the time it took us to vacate the plot was much more than what we anticipated at the time of the launch. Because of that, the work that started got delayed, and hence, the timeline that was committed to the customer got delayed. Having said that, once we have already handed over all the apartments of the slum dwellers in Sky Green as well as Optima. We have already handed over more than 1,000 actually more than 2,000 flats between Sky Green and Optima to the slum dwellers. So their part is completely over and done with. Now, if you see the construction of Optima and Sky Green, it is going on in full swing. In fact, you should go though I know you are not buying there, but just to get the sense of the work, the way it is progressing, you should in fact go and visit Optima once, just to get a feel of what we are making, how we are doing. You can see the actual flat. It's a very small, again targeted to a very different audience than what you are. It's a 322 square feet small 1 BHK apartment, but in that also it has been so nicely made. You can go into the actual apartment also, which in one of the floors we have also got it ready. Sky Green also work for 2 wings started. The work for the 3rd wing also has just begun. The 3rd wing got delayed. Now, when you say that what is the feedback or what do you do with the customer, I can tell you for a fact, every 3 months we call them, we explain our situation,
In fact, the last meeting that happened for Sky Greens was 1 month back, where we book a hall, we call them, we give them food, we show the progress, you also show them the challenges. Sky Green challenge happened because of DHFL. It was a tie-up. Then why people are taking social media to comment on this? People see, I understand. It's a sensitive matter. I understand that people are putting their hard-earned money. So people get emotional about it. And people do all this. We are, in spite of, and apne isme kya hai? I'll tell you one more thing also. Everyone, there will always be certain groups of people who will do it as a campaign to malign, in hope that, something we will get, some advantage we will get, कुछ पैसा मिलेगा. इधर का हालत ऐसा है ना, everyone thinks कि इसको दबा सकते हैं, इसका ये करेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा. So that is one, and it's an organized campaign that people get into. Now, I have two choices. Either I, give that too much importance, and if I start doing that, I can tell you, and we have tried it, we've tried everything possible. Then day in and day out, we will be only doing this. If I do and something and कल कुछ और कोई और उठता है, फिर वो कुछ और चालू करता है. So it happens with us. अपना लाइन ही ऐसा है. We rather than that focus on execution, because once the execution, see, the proof of the pudding is in eating it. Execution tomorrow, even if it is delayed execution, whatever we committed, we delivered to the best of our ability. Coming to the present, now coming to Excel, this particular project where you came in, let me tell you, Excel is a different story altogether. Not is 100% weekend. It is again a takeover of another project. Developer could not execute. We came in, we come in with our expertise of selling and marketing. In a matter of months, we sold 235 apartments. And it was right in front of you. हमारे इसमें क्या है, हमारे इंडस्ट्री में lot of players also inflate the numbers. कि 100 बिका तो 200 बताएंगे, 200 बिका तो 400 बताएंगे. हम लोग तो वो भी नहीं करते. हमने तो उधर ही बोर्ड डाल दिया था, आपके सामने जो है, जो अवेलेबल है, जो दिख गया वो दिख गया. So but what we managed, and the other guy who was trying to do that earlier, he was sitting on it for 7 years. For 7 years he could not sell. But when we were acquiring this, I was there the first time when we saw it. The apartment that guy had planned, he will be shocked to hear. We had planned a 2-bedroom apartment with one common washroom. Nicely done sample plan. 2-bedroom apartment with one common washroom. I said, who buys this? No one will buy it. If no one will buy it, you will not be able to build. And, अगर तुम्हारा planning ही गलत है, see that, and you have to take care of surroundings also a little bit. It was like a dumping ground. So we did a massive cleanup exercise. We cleaned the entire plot. We changed the entire planning. The planning that you saw now was not the planning that this guy had done. The product itself was flawed to begin with. So hence he could not do it. Now the product has changed. We have a very solid sales book here. See, eventually after all this also you may say I don't want to go ahead. Fair enough. I can't, but the fact that, I went through the mail and then, being a custodian of the brand, I thought let me at least give you my point of view and then leave it to your good judgment. You have put in some money. You liked what you saw. I understand from your side also, as a layman, as a consumer, you are bombarded with different information. But I want you to take a holistic view after listening to me, and also if you can take some time off, come here, come to Palatio, see our project here, see
what I can do is I can allot someone from my team. He will take you around of you for development. He'll show you the progress in the project. Now in Kandivali, Palatio is going on, progressing at a very good speed. Sky Green Optima got delayed earlier, but we have picked up. I can't go back, unfortunately, and undo what happened. But I can only talk about future. Now, everything is moving at a lightning fast speed. And Excel as a project, or West Sky as a project, is absolutely clear. We have a solid, sales pipeline. The plot is absolutely clear. In fact, work has already started. I mean, the entire setup that you saw is gone now. And the construction work has already started on it. Okay. Now, my guy probably could not articulate this in the manner, that I did. But the point is whether, I strongly believe, sales pitch is one part. I may give you a very fancy sales pitch, but, at the end of the day, the customer has to like the product. He has to like, the location should be suitable for him. It should be, the price point should be achievable for him. And the apartment that he saw should be of, liking to the customer. Those things also play a very big role in the decision-making process of the buyer. I can also hire, very good salespeople who can do an excellent pitch. But if it is not, the product is wrong, it will not sell, no matter how good the pitch is. As far as the broker thing is concerned, the other point that you mentioned, the gentleman that you were sitting with, I don't know what he portrayed to you. But he's one consultant who's been working with us, and he's one of those who only works with us. Normally a broker is a freelancer, right? You can today work with me, tomorrow work with Lota, anywhere. So we have a very old relationship with him. He works, as good as part of our team, because he is someone who has been with us and. But then why didn't you disclose this thing at the time when I was sitting over there? Like Nishit got the form signed from my brother, and later on he filled those particular details, and I was not informed about that. I don't know. I'll chat with him. Normally he doesn't do that, but probably sometimes what happens. Sometimes if a particular customer shows some resistance, or maybe I don't know what happened. I'll have a chat with him separately. I don't know. But as far as I remember, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. वो टाइम पे हम गए, हमारा डायरेक्ट, I guess मुझे वहाँ जाने के बाद पहले निशित ने ही अप्रोच किया, then धीरे ना आए, and then उन्होंने जो भी, all the details that they started sharing, and in the end when we booked the flat, we filled the form, all the other details except the price and this particular channel partner details were filled by me, and on the signature that have been done on the first page. So that has been done by Nishit or either Dhiren. I won't be able to make a concrete statement on that. But I'll have a chat with him right now. Let me understand what he did and why he did that, and also if I'll ask him to call you, or probably we'll chat on a phone call. Clear this thing out also. But let me also assure you, whether a broker or a no broker, for you, there is no difference in. No, ब्रोकर वाली बात नहीं है. एक्चुअली बात कैसा है, ब्रोकर वाला पॉइंट आया, उसके बाद सारे डाउट्स क्रिएट उससे सारी चीजें आई, फिर बाद में जो जनरल मार्केट फीडबैक था वो आया. ठीक है, तो चलो फिर वो सारी चीजें निकली. उसको एक मिनट के लिए साइड पे रखो. आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज फर्स्ट वेदर यू वांट टू गो अहेड और नॉट. दैट इज द प्राइमरी थिंग. Okay, that is the primary thing. Then that thing you can always. Okay, then आपका ये जो regarding subvention scheme का है, जो EMI payback नहीं हो रहे हैं, और ये जो गीतांजलि शर्मा और एक कोई पर्सन थे, उनका नाम नहीं recollect कर पा रहा हूँ. Sorry, I missed that point. So yes, so there was I joined this company in November of 2019. Gीतांजali was I head the sales department. Gीtaanjali was heading the CRM department. You are again very right. We had received
numerous complaints. What you told me was, in fact, on a milder note, there were different kinds of integrity issues that also cropped up. Now, companies, see, I also had a large team. I have about 70, 80 people now under me. Companies as well as individuals, we sometimes end up hiring wrong resources. And when that happens, the best thing that you can do is replace the person. And that's exactly what we did. In fact, when we replaced the head, we also realized and understood that it is, a certain mindset has crept in the entire team. We replaced the entire CRM team itself. Okay. At the same time, I also want to set your expectations from us in the right manner. Okay. For us, it has been a journey. Okay. If I was to, suppose I was to rate myself, if I were to go back 2 years back, if I was 5, if I rate myself as an organization process, sort of thing, if I rate myself 5 at that point of time, today I am at say 8, but I'm still not 10. And that 10 also we will reach, but it is going to be a journey for us. We are a large organization. We are 400 plus people. We are 18 plus projects. So we are an ambitious group. But there are certain things that we daily improve. Now, as far as CRM goes, I want to slightly set your little expectation in a more realistic manner, so that you also don't feel undone at the end of the day. So, CRM is again a very large team, and CRM focuses a little bit more on the collection part, so that we get the money timely, and only that will ensure timely execution also. Okay, so there can be certain instances, and there are a lot of people involved, so there will be a dedicated RM team. But if at all there is any gap in what you are communicated and what CRM is saying, then please get back to the sales team. Now, I am also in touch with you. In case there is anything, we can iron it out. But there can be some instances where you feel कि नहीं ये थोड़ा मैंने X बोल रहा था ये Y बोल रहे हैं. वो थोड़ा बहुत होता है कभी कभार. Because I don't want to claim as a ISO 9000 as a company. हम वहाँ नहीं पहुँचे. We've reached there. But there are possibilities. मैं बोलता हूँ नहीं कि हो गई बेटा. But there are some possibilities that you may feel but the major issue that was there earlier with the person, the range that you took, has been eliminated. Has been changed. We call it wrong. I just want to confirm, when was Gitanjali replaced? 1 year. 1 year back. So I've also read few comments, which are dated in somewhere in October 2021, and people are saying that they have made the interest payment of I have shared the screenshot. Can you please check the screenshot? I've actually attached the screenshot. Regarding the interest payment, the reimbursement of interest payment. Yes. Regarding reimbursement of interest payment possible. But not for Gitanjali. No, not for Gitanjali. Not for Gitanjali. But even if this problem are still existing, then how does it make sense for me to if this particular employee is replaced? Then I'm assured that there won't be any issue regarding the whole payment schedule. The rude and unprofessional behavior is what I was talking about on the Gitanjali bill. Interest payment delay. See, I tell you, Sky Green as a project, we had a major tie-up with DHFL. DHFL said we had a direct, abhi to RBI doesn't even allow that. But there, at that point of time, there was a, direct subvention deal done with DHFL, wherein, by paying a small amount, all the other disbursements will come from DHFL.
Now DHFL went down. You know the DHFL story. The DHFL went down, and obviously, they went down. The entire cash flow stopped. The project cash flow stopped. Then what we did is case, and we had hundreds of buyers. Case by case. We resolved whatever we could. We did the balance transfers of people to other banks. Now, other banks didn't have the DHFL facility what we had with DHFL. It was unfortunate because we didn't anticipate that. Pushness, then some people, people are people at the end of the day. Some people will not cooperate. तुमने ये बोला था, तुमने ऐसा बोला था, और ये ऐसा होना ही चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. And even if वो जो डायरेक्ट डेबिट नहीं हो रहा है तो मेरे को रीइंबर्स करना है. रीइंबर्स करने के लिए भी मेरा डिले हुआ. केस बाय केस हमने एक रिजॉल्व किया. डिले लेकिन अभी भी हो रहा है ना. अगर लोग आज कमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, डिले अभी भी हो रहा है वो. और बट आर यू गोइंग इन सबवेंशन? No, I'm not, but I'll be concerned now where even like if I'm transacting with a particular company and other customers are unhappy about their behavior. So that will be a concern for me as well, right? See, for us also, now the cash flow is important. The DHFL, the way it was panned out did not happen. So cash flow took a hit majorly. Now if you see, now look at any launch. Right now also a launch is going on. Tomorrow you will see ad in all the papers. I saw your launch regarding Millennia. Yes. Okay. Now, see, it's been a learning for us also. We don't do mass scale subvention now at all. Because we also realized that end of the day it is hitting the cash flow in a big way. Abhi jo, like Excel also, we never spoke about subvention. No, I was offered like this particular subvention scheme, but my planning was different, so I didn't go for this particular option. Yeah, but I was offered that particular option. No, you are offered. I'm still offering. What I'm saying is something different. I'm saying we don't do large scale subvention. I have a project cap of 10%. If I sell 100 apartments in a project, only 10 I will do in subvention, 90 I will do in construction insurance. If I advertise 10-90 subvention schemes all over the town, everyone will come and do a subvention. We stopped doing that now because we also know that cash flow cycle is getting a hit. थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना, cash flow hit हो जाता है प्रोजेक्ट का. और पहले जैसा है नहीं कि अगर मेरा साउथ बॉम्बे का प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का कैश फ्लो कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है तो मैं वहां से डाइवर्ट करूं, तो एवरीथिंग इज एन एस्क्रो रहा. So that particular project has to be self-sustaining. So now, if you see, we don't do cash subvention large scale. We keep it for some by 10% cases किया, 10-15% maximum किया सबवेंशन में, तो इट इज पॉसिबल. अगर मैं 100 में से 90 सबवेंशन करूंगा और हम क्या कोई और भी कर रहा है तो उसको भी मैं आगे फ्रेंड एडवाइस करूंगा कि मत करो, और बायर को भी बोलूंगा कि अगर वो इतना सबवेंशन एडवर्टाइज कर रहा है तो देयर इज अ रेड फ्लैग, प्लीज बी केयरफुल. So we have now, we don't advertise subvention. We only do it for limited number of cases. I have an internal cap of approximately 10% of the cases that I can do in subvention. And then we use it on a case-to-case basis. If I have that window available, I offer. If I don't have that window available, I don't offer. But majority of my cases right now are in CLP. Here also in Millennia, I am offering subvention. But I have not, the launch is actually tomorrow. But we started from pre-launch. We sold 70 apartments. I did not do even one in subvention till now. अभी तक तो नहीं किया. ओके हितेश जी, आपने जो दिया ना क्लैरिफिकेशन और आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब रखा आगे, ठीक है. मतलब आपने एक कंसर्न रखा, जैसा आपने बोला कि इवन यू आर स्टिल लर्निंग एंड ओवर द टाइम यू विल लाइक reach to a point where you will be like in a stage where you will be able to deliver better to your customers. But considering the current situation, we have already started delivering. No, I would want you to. Yes, I totally understand your point.
come and see the projects, for your own. See, I may say a lot of things, but why don't you come and see it yourself? And of course, it will, take maybe half a day. But Okay, maybe I'll do that. Maybe I'll actually visit your site and I'll see the project, like what the construction is going on and whether it does actually matches with what you are saying or not. But Correct. Then, right now, I'm still not fully convinced that my money is safe with Ruparel Realty, and going forward, whether should I continue with this particular transaction or not. But mostly I'll be withdrawing my booking amount and I'll be taking my business somewhere else. But on the face, the justification that you gave to me right now, I'm definitely considering that I should actually in a type of a relationship thing, जैसा आपने बोला कि your yes. voice is breaking now. I'm telling you. Hello. Am I audible clearly now? Yeah. हाँ, तो जैसा आपने बोला ना कि एक बार प्रोजेक्ट देख लो, मैं वो कंफर्म करूंगा एक बार खाली कि ठीक है क्या बैकग्राउंड नहीं है. बट देन स्टिल आपका जो ये सबवेंशन स्कीम का ये इशू था और फिलहाल आपका जो पास्ट प्रोजेक्ट आपने DHFL वगैरह नहीं, मैं सबवेंशन नहीं ले रहा हूँ. बट देन एक ये होता है ना, ब्रांड वैल्यू होता है. जैसे अभी एक पर्टिकुलर कस्टमर को कोई इशू आ रहा है, देन वो मेरे लिए एक कंसर्न बन जाता है ना कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अभी सबवेंशन तो एक प्रॉब्लम है, मे बी फ्यूचर में पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ हो. अभी जैसे हमारे केस में ही हुआ था, हमारे केस में निश्चित से बात हुआ था कि ये 15 डेज का उन्होंने इसमें लिखा हुआ था अपना जो आपका ये शीट होता है, कॉस्ट शीट होता है. नहीं हाँ ठीक है, नहीं मैं खाली ये कन्वे कर रहा हूँ. आपने तो निश्चित को हम वो कॉल पे जो आपने बोला वो हम बात करेंगे. Your voice is gone again. Let me disconnect and call you. Okay, sure. Okay.